Hello everyone, Vinita this side. So welcome back to my channel. So in this video we are going to start with the NCRT solutions of the chapter of the poem The Wind. So here we do have some questions that we need to answer. So our question number 1. What are the things the wind does in first stanza? In first stanza, what we have discussed already, have you remembered that what should be described in our first stanza? Yes. In the first stanza, the poet requests the wind to blow gently and not to destroy anything with its force. He asks the wind not to break the shutters of the windows and scatter the papers here and there. So he also requests the wind not to throw the books on the sill. At that point, he says to the wind, check out the obliteration that you bring about. What have tossed everybody down and disarranged everything infrable from your power. The pages of the books have been destroyed. You have brought the downpour. Further, the poet says that the wind is exceptionally poignant in ridiculing frail individuals. So if we are discuss the exact meaning of the first stanza, so according to that stanza, what are the things the poet does in the first? Yeah, great. So the wind breaks the shutters of the window, scatters the papers, throw down the books on the shelf, tears the pages of the books and brings the rain again. So these are some points that the wind breaks. वो क्या करती है, विंडोज के शटर को तोड़ देती है, पेपर्स को बिखेर देती है, थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स पे शेल्फ पे जो बुक्स हैं उनको फेंक देती है, टीयर द पेजेस, पेजेस को फाड़ देती है, एंड ब्रिंग्स द रेन, और बारिश ले आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम ऑन अ पडी फील्ड? क्या आपने कभी देखा है किसी को ग्रेन को, अनाज को विनो खराब करते हुए एट होम, बिखेरते हुए, और इन अ पैडी फील्ड, या किसी भी फील्ड में? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? आपकी अकॉर्डिंग विनोइंग के लिए कोई वर्ड बताओ. व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? यस, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर विनोइंग ग्रेन एट होम. हाँ, मैंने अपनी मम्मा को देखा है बिखेरते हुए ग्रेन को घर पे. इसको क्या बोलते हैं? फटकना, पटकना is the word in my language Hindi for winnowing. Winnowing basket is used for winnowing, कि वहां पर क्या करते हैं, आटे को, व्हीट को छानने के लिए हम यूज करते हैं, कि उसमें जो खराब खराब तिनके होते हैं ना, वो वहां से निकल जाते हैं. ठीक है, और जो सही वाले होते हैं वो जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाते हैं, उसमें रह जाते हैं. सो फटकना इज द सिनोनिम वी कैन से दैट फॉर विनोइंग. ठीक है, सो यूजुअली he take the word. Next, what does the poet say the wind god winnows? अब उसने क्या बताया कि अब जो wind god है वो क्या विनोस करता है, वो क्या खराब करता है. So the poet says that the wind god winnows crumbling houses, लड़खड़ाते हुए जो वीक हैं, जो घर हैं, जो डोर्स हैं, जो राफ्टर्स हैं, जो वुड हैं, बॉडीज हैं, लाइफ हैं, जो हार्ट हैं, एंड देन क्रशेज देम ऑल. हर एक उस चीज को तबाह कर देती है विंड, जो चीज क्या होती है, क्रम्बलिंग होती है, लड़खड़ाती हुई होती है, एंड क्रशेज देम ऑल, उन सबको क्या कर देती है, क्रश कर देती है. एंड according to that we need to learn some literary devices. As you know, the poem is written in free verse.
because there is no rhyme scheme. So we do have anaphora because in line second, third, and fourth, it will be begin with don't, and sixth, seventh, eighth starts with you. So that's why these are anaphora. Personification, we can say that wind has been personified because when the poet says you are, he is referring to wind as you. So that means he is treating wind as a person. Next, repetition. Crumbling is repeated many times to lay emphasis. The poet wants to say that the wind crushes everything that is weak. अब repetition है crumbling word का कि हर एक चीज के साथ हर एक वर्ड के साथ एक crumbling word जो है वो ऐड किया गया था. So that's why we can say that it is a repetition. Next is alliteration. Alliteration में क्या होता है, consonant sounds जो है वो repeat हो जाती हैं. So like close connection, wind, winnows, won't. And at last we do have symbolism, which means that the thing that to go some other person life. The wind as a symbol, it refers to the challenges. So that's why I've heard so much. And he is using wind. I don't know, but it was not a good thing that the wind is a symbol. It refers to the challenges in life. So we can say that here wind is as a symbol for the adversity in our life. So we do have the question number 4. What should we do to make friends with the wind? हमें क्या करना होगा अगर हमें wind के साथ friendship करनी है तो हमने पढ़ा था poem में that we should build strong homes and doors. We should strengthen our bodies and make the heart beat fast. हमें क्या करना है, हर चीज को बहुत मजबूत बनाना है. If we want to become the friend of the wind ना, so we need to build strong homes, strong doors, and we should strengthen our bodies. हमें अपनी body की power को increase करना होगा and heart beat fast. और अपने जो दिल को क्या करना होगा, एक बहुत ज्यादा मजबूत बनाना होगा. So what do the last 4 lines of the poem mean to you? What does we do? हमें क्या करना चाहिए? In last 4 lines the poet mean to you, वो क्या कहना चाहता है? The last 4 lines give a very powerful message. वो हमें बहुत powerful message दे रहा है. They say that the wind that blows weak fires is the same wind that makes strong fire flourish. कि वो कहता है कि अगर विंड है, वो अगर वीक फायर है ना, तो वो उसको ब्लो कर देती है. बात की गहराई को थोड़ा सा समझो कि इफ वी डू हैव वीक फायर, देन द विंड इजीली ब्लोज इट, उसको बुझा देगी. दैट मेक्स बट सेम विंड, अगर वही सेम हवा है और वो जो आग है वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो उससे आग और ज्यादा क्या हो जाएगी, फ्लोरिश हो जाएगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो इसीलिए कहा गया है कि लाइफ में अगर हमारे पास ऑब्स्टेकल्स हैं, एडवर्सिटीज हैं, तो अगर हम उसके सामने वीक बन के खड़े रहेंगे ना, तो वो हमें उड़ाकर चली जाएगी. लेकिन अगर हम अपने उसके आगे बिल्कुल स्टीड फास्ट स्ट्रॉन्ग होकर खड़े हैं ना, तो वो हमारे को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. So this implies that the weak people are broken by force. Weak people टूट जाते हैं फोर्स लगने से. But the people who are strong, लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं, are strengthened by those forces. उनकी ताकत बढ़ जाती है उन फोर्स से. So the relationship with the wind or the strong force is good. मजबूत फोर्स का और friendship with the wind is very good way. So we have to just stay strong mentally as well as physically. तो हमें mentally भी strong बनाना है खुद को और physically तो बनाना ही बनाना. I hope you will understand this. Good. So one more thing I just want to clear with. Here we are using a word we knows. The poet is addressing the wind as wind god.
And he's saying that the powerful god of wind, we knows that means he shifts all the people, and those people who are weak fall down and get crushes. So here is a comparison as made between wheat and people. गेहूं और लोगों के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है. Just like we know the wheat to separate the grain from chaff. कि जैसे हम विनो करते हैं, फटकते हैं, छानते हैं वीट को सेपरेट करने के लिए ग्रेन से, दाने से. द विंड गॉड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल. इसी तरह से जो गॉड है ना, विंड गॉड है, वो सेपरेट करता है लोगों को, मजबूत लोगों को, किससे, कमजोर लोगों से. when there is a strong wind, अगर बहुत strong wind है, all the thing that are weak, तो वही चीजें जो हैं वो गिरती हैं, और वही चीजें क्रश होती हैं जो क्या होती हैं, वीक होती हैं, वही गिरती हैं. So the poet wants us to make friends with the wind, with the adversities in our life. So he says that the problems will not listen to us, they will come. So we should be prepared, in preparation. We should build strong homes and close the door of our house firmly so that the wind cannot get into. And then he says that we should also make our bodies strong, heart strong. And then once we are strong enough to have the challenges, will be like friends, so we will not feel that they are troublesome. So here we do have the last question, question number 6. How does the poet speak to the wind, in anger or humor? कैसे बात कर रहा है वो wind से? So the poet speaks the wind with humor. बहुत खुशी से बात कर रहा है, मतलब बहुत आनंद मजा लेके बात कर रहा है. He says that the wind crushes houses, doors, rafters, wood, bodies and leaves. He says that it breaks the shutters of the windows, scatter the papers, but at the time he also points out that the wind brings rain. वो बारिश ले आती है. He tells the readers that we must become powerful. हमें powerful बनना होगा, बहुत strong houses बनाने होंगे, because the wind only damage, क्योंकि जो wind है सिर्फ वो एक ही चीज को खराब करती है, और वो चीज है जो weak होती है. And yes, I too have seen the wind crumbling leaves on the news channel. हमने बहुत बार news channels पे देखा है that the wind brings massive destruction sometimes. कि कई बार हवा से ही बहुत ज़्यादा destruction होता है, बहुत ज़्यादा mess हो जाता है, बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है. It uproots weak trees, कमज़ोर पेड़ पौधे जो हैं वो uprooted हो जाते हैं. And even claims lives of people, बहुत सारे लोगों की जानें भी जो है वो फंस जाती हैं. बट एज द पॉइट सेज, लेकिन जैसा पॉइट ने बताया दैट वी मस्ट ट्राई टू डू मोर पावरफुल एंड बिल्ड पावरफुल स्ट्रक्चर्स. हमें खुद को भी पावरफुल बनाना है और अपने स्ट्रक्चर को भी पावरफुल बनाना है. So and next the poem you have just read is originally in Tamil. So do you know such other poems in this language? Yes, in Hindi we do have one more poem related to that, and the name of that poem is Tufan. Okay, so thank you. Have a nice day.